Hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss the Hindu analysis of Saturday, that is 8th February. So I hope you are aware that every day except Sunday, we do the Hindu analysis, which is generally done by Govind sir. But on Saturday, he is having a week off, so I'll be taking the class. Okay. So am I audible, visible? Everything is fine? So if my voice is reaching, everything is fine, please write yes in the comments so that we can begin our class. So if my voice is okay, so let us begin with today's class. So today is Saturday 8th February और ये फर्स्ट पेज पे आर्टिकल है ग्रोथ पुश आरबीआई कट्स रेपो रेट बाय 0.25%. सो इसमें सिर्फ रेट लिख दिया है, कट्स रेट मतलब एक्चुअली इट इज टॉकिंग अबाउट रेपो रेट और पॉलिसी रेट्स इसको कहते हैं. So we will discuss in detail. In fact, today there is an editorial on this. So I will explain in detail about the editorial because you should understand how the repo rate, the change in repo rate impacts monetary policy or money supply in the economy, which in turn impacts inflation as well as growth, GDP growth, etc. So how it impacts, we will discuss today. Okay. Second, the first page में article थी is actually talking about Delhi waits with bated breath as poll results to be declared today. So I hope the poll, the election results has already been declared, means almost been declared. So it is now very much clear who is going to have the next government. Please write in the comment which political party has crossed the majority mark. So basically the Delhi Legislative Assembly is having how many seats? 70 seats. And if you want to make your chief minister, you need how much seats? MPC में मैंने क्लास लिया है प्रियंशी. I will discuss. Just wait. हाँ. So BJP has crossed the seats, the half mark. So half mark means 30 by 70 by 2 is 35. So basically, you need to get at least 36 seats. 35 से भी काम नहीं चलेगा because you have to cross the half mark and whatever the current news is saying, it has already crossed. So that is what you should be knowing. Not 35, 36 होना चाहिए. ठीक है? Government बनाने के लिए. Fine. So let us talk about this growth push. RBI cuts repo rate by 0.25%. अब देखो, first of all, let me discuss what is repo rate. तो मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी मैंने क्लास लिया था. So first of all, please subscribe to our channel. इसमें लाइव वाले सेक्शन में जाना, इसमें नीचे जाना, go down, and you will get this video, important economic terms करके. Please go and watch it. इसमें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है what is repo rate and how it impacts monetary policy or money supply in the economy. But still in today's editorial, I will explain. Editorial में discussion है that how it impacts the inflation and all. So we will discuss in editorial also. Okay, sorry, the slide is not visible. Just hold on for a second. I think now it is visible. Sorry. ठीक है. Yes. So basically आप देखोगे growth rate, RBI cuts repo rate by 0.25%. ठीक है. I'm very sorry I did not switch to this PowerPoint. Now I think it's visible. है ना? So basically growth push, RBI cuts repo rate by 0.25%. So this is the first page article. And to know what is repo rate, on our first of all, please subscribe to the channel. Go to the live section. ठीक है? इस live section पे जाइएगा. And I have made this class important economic terms. ठीक है? इसको आप देख लीजिएगा. Please go and watch it. Because here I have discussed about repo rate, reverse statutory liquidity ratio, cash reserve ratio, ये सब बताया है. ठीक है? But still in today's editorial section, I will discuss in detail about how the decrease in repo rate leads to increase in money supply in the economy and leads to demand pull, inflation, etc. मैं बताऊंगा. Just watch the entire class. You will understand the concept. So you will understand these things. ठीक है? Okay. तो अभी एक रफ आइडिया देने के लिए देखो ये बता ये रहा है कि in the last 57 months, this is for the first time that monetary policy has been reduced. Repo rate has been reduced, unanimously cut by 25 basis point. Okay. Now, so सबसे पहले I have made a shift since you are asking about monetary policy committee. मैंने एक वीडियो बनाया, just go to the YouTube और search this. ये सर्च करना RBI career launcher law entrance. You will get this video. ठीक है? So इस वीडियो में I have discussed about RBI and I have discussed about monetary policy committee in detail. The concept and all, what should be the inflation target, etc. ये सब discuss किया. Please देखिएगा.
बस इसमें एक चीज चेंज हुई है, उस टाइम पर आरबीआई के गवर्नर थे मिस्टर शक्तिकांता दास, नाउ वी आर हैविंग अ न्यू गवर्नर. So at that time the governor was Mr. Shaktikanta Das. Now who is the RBI governor currently? Please tell me. अभी फिलहाल RBI governor कौन है? You should be knowing it because these are basic things. ठीक है. Okay, now इस आर्टिकल में बात हो रही बेसिस पॉइंट की. So what is basis point? Yes, Mr. Sanjay Malhotra is the RBI governor. ये सब मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है ऐसे ऑलरेडी. What is basis point? One basis point is equal to how much percentage? बताइए. 0.01. Yes, Priyanshi got right. हाँ. So basically one basis point BPS ऐसे लिखते हैं is equivalent to 0.01%. ठीक है. Yes, Priyanshi, Govind and Hari, you are also right. तो इसमें जो आर्टिकल में कह रहे हैं कि for the first time it has cut the repo rate by 25 basis point to 6.25%. मतलब क्या हुआ? देखो पहले जो था 25 basis point का क्या मतलब होगा? It will be equal to 0.25% because one basis point is 0.01%. So 25 basis point is 0.25%. Okay. Now तो पहले रेपो रेट था कितना? So the earlier the repo rate was 6.5%, 50% है ना. And they have cut this. दिखा ना कि cuts repo rate. Cuts मतलब होता है reduce करना. So unanimously cut मतलब all the members of monetary policy committee voted for this. How many members are there? Please tell me. All the members of monetary policy committee, they said in that yes, we need to reduce it. So पहले earlier the repo rate was 6.5%, so minus 0.25%, and now we are having currently 6.25% of repo rate. और पॉलिसी रेट्स भी कहते हैं. यस, मॉनेटरी पॉलिसी में 6 मेंबर होते हैं. यस, प्रियांशी, गोयल, प्रांशी, पीयूष, यू ऑल आर राइट. ठीक है. सो मॉनेटरी पॉलिसी इज हैविंग 6 मेंबर्स. ये सब मैंने बताया इसका जेनेसिस कैसे हुआ, कौन सी कमेटी थी, व्हाट आर द इन्फ्लेशन टारगेट एटसेट्रा. ठीक है. तो अगर आप देखोगे तो मैंने आज ही सुबह में चेक किया आरबीआई का, तो इनकी वेबसाइट पे लिखा था ना पॉलिसी रेट्स लिखते हैं, रेपो रेट्स या सिर्फ रेट लिख देंगे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज टॉकिंग अबाउट रेपो रेट 6.25%. Now, please tell me what is repo rate? होता क्या है? कोई बता सकता है? In this class, ये वाली जो क्लास है, देखो हमारे चैनल में जाना, go to our channel, go to the live section, नीचे जाना. So इस क्लास में important economic terms, ठीक है, इसमें आपको मिल जाएगा. You will get to know what is repo rate, but I want you to know. Please tell me. Yes, Piyush, very good. हाँ. So RBI जो है, RBI लोन्स देती है शेड्यूल कमर्शियल बैंक यानी कमर्शियल बैंक्स को. सो मान लीजिए लोन दे रही है तो कौन से इंटरेस्ट रेट पर दे रही. मान लो लेट्स से दिस आर इज दिस इंटरेस्ट रेट जो होता है ना, इसी को रेपो रेट कहते हैं. ओके, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. हाँ, इट इज द रेट एट व्हिच आरबीआई लेंड्स टू मनी टू द कमर्शियल बैंक. यस, पीयूष एंड प्रियांशी गोयल बोथ आर राइट. नाउ आई विल डिस्कस इन टुडेज एडिटोरियल दैट हाउ इट इंपैक्ट्स डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड हाउ इट इंपैक्ट्स द ग्रोथ. ये मैं डिस्कस करूंगा जब मैं एडिटोरियल डिस्कस कराऊंगा आफ्टर 5 or 10 मिनट्स. ठीक है. सो वेट देन. ठीक है. तो इसी में बता दें कि आरबीआई पॉलिसी शिफ्ट है ना. नाउ दैट लोन्स वुड बिकम ट्रांसलेटेड इनटू चीपर लोन्स फॉर होम्स, कार्स, अदर पर्पसेस एटसेट्रा. ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. एंड आरबीआई गवर्नर इज मिस्टर संजय मल्होत्रा. नाउ ये तो मैंने डिस्कस कर लिया दैट टुडे वी आर हैविंग इलेक्शन एंड देयर आर 70 सीट्स. सो 70 by 2 करोगे तो 35. सो यू नीड एटलीस्ट 36 सीट्स टू फॉर्म योर गवर्नमेंट. And right now, actually, the BJP is. It appears that BJP will form the government. Yes, Priyanshi Goel, very good. The more the repo rate is, the less the bank will be able to lend money, and hence less money in circulation. So, if there is less money in circulation, there will be more inflation or less inflation. अगर बताइए Priyanshi, you have answered it. Very good, fantastic. Now my question is, if there is less money in the hands of the people, will it lead to more inflation or less inflation? Less inflation. Very good. Great. Good. I will explain. ठीक है, ऐसे आपने बिल्कुल सही बताया. ठीक है. Okay, I will explain when I'll discuss editorial 5 minutes later. Okay. So first page में एक और आर्टिकल थी, गवर्नमेंट फ्लैग्स कंसर्न ओवर यूएस शैकलिंग ऑफ इंडियन डिपोटीज. ये भी काफी न्यूज में था, आपने देखा होगा. सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज handcuffed, legs shackled on, मतलब उनमें क्या हथकड़ी लगा के भेज दिया गया था. तो some of the deportees Indian reached अहमदाबाद. तो कुछ लोग अहमदाबाद से थे, गुजरात से थे, और प्लेन जो लाया गया था वो अमृतसर में लैंड कराया गया था. So it was landed this
and this was a US military plane. And I hope you are aware that Donald Trump is now the US president. And after that, he had earlier promised that he will send back the illegal immigrants, etc. and all. So actually, that was being sent. But the problem was कि it was done मतलब थोड़ा सा humiliate किया गया मतलब like by having like handcuff करने की मतलब it should not have been required like so that is why it was in the news की मतलब government ने issue थोड़ा सा raise किया flags concern मतलब ये कि they should have been sent in a like comparatively more decent way and all. So ये news में था. And please tell me that Donald Trump has become the US president. Which US president? मतलब नंबर बताना है कौन सा वाला मतलब 14, 15, 16, 28, 30, 48 कौन से वाले प्रेसिडेंट बने and which party he belongs to. सब मैंने कराया already. These things I've already done. Yes, Piyush, very good. 47th US president bane. And which party he belongs to? Party belongs to is Republican. 47th and Republican Party. Yes, Piyush, Priyanshi, Hari. Good, you are right. Republican Party से. ठीक है. So now let's move on to editorials. तो अब editorial में जो main article है ये लिखा गया है Mr. Shashi Tharoor के द्वारा. And he is currently the member of parliament also from Indian National Congress and earlier served in United Nations also at senior positions. I hope you are aware of him. आपने इनका नाम सुना होगा. So India's voice must resonate in global AI conversations. तो अब actually क्या है? So he is actually global AI conversation का क्या मतलब है? तो कुछ चीज होती है, for example, like when we are talking about climate change, we are talking about trade, we are talking about artificial intelligence, fighting terrorism. ये सब इसमें क्या होता है? ग्लोबल मीटिंग्स होती है. Why? Because it cannot be controlled by one country. Like for example, artificial intelligence, cyber security. इसलिए कि एक कंट्री का मामला नहीं ना है. For example, if you are living in India, you might face a cyber attack from some other country. Okay, it is borderless. Similarly, if there are issues, privacy issues, or any other issues regarding artificial intelligence, it is borderless. Okay, so that is why global talk is very important. The countries should come together to solve this problem if there is any issues in artificial intelligence. ठीक है, तो ये बात करें तो चलो देखो उन्होंने जैसे एक बिगिनिंग किया. गूगल का चैटबॉट है, एआई चैटबॉट जेमिनी कहते हैं. अर्लियर इट वाज कॉल्ड एज बार्ड, आपने नाम सुना होगा. और इसी से कनेक्टेड है लैम्डा, है ना, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन. दिस वाज आस्क्ड इन क्लैट एग्जाम आल्सो 2023 या 22 में पूछा था. ओके, सो बेसिकली ये बता ये रहे कि जेमिनी से कोई क्वेश्चन पूछा गया and this question was asked about old age people, and after talking a lot, after having some conversation, the Gemini became, I don't know why, how he started using some rude or harsh words like, this is for you human, you are a waste of time resource, you are a stain on the universe, please die, something like that. जैसा वो लिख रही थी ऐसा उसने जवाब दे दिया. अब ये जवाब तो खराब जवाब है ना. This is not considered as a very good actually, because this is very rude statement na, like, and so that is why it raised issues and all. If this should be used in future, then of course it will create problems and all. ठीक है, तो उन्होंने एक एग्जांपल बताया है ना about artificial intelligence, which like ठीक है. फिर नवंबर 2024 इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ एआई सेफ्टी. तो जितना भी बात है वो इंटरनेशनल टॉक्स की बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड. So he's talking in the entire chapter about the safety of artificial intelligence and all. ठीक है. अब देखो एक और आया था डीप सीक करके. If you have not watched the video, please watch it. ये सर्च करना YouTube पे, you will get this. This is made by China, which is actually challenging ChatGPT, है ना, because it is much cheaper. तो काफी सस्ता है as compared to ChatGPT. Like it invested very small amount of money as compared to the ChatGPT owner OpenAI. तो इसीलिए ये भी काफी न्यूज में था. खैर, so basically this author is talking in detail about this, the different international summits or meetings related with artificial intelligence. ठीक है, तो इन्होंने कुछ बात किया, तो मैं आपको दो तीन बस एग्जांपल बताता हूँ, इतना डिटेल नहीं जाना है. एक इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, है ना. दिस डेवलपमेंट अंडरस्कोर्स द अर्जेंसी ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स. तो इस पूरी जो उन्होंने दलील दिया है, सो ही इज एक्चुअली emphasizing on the need for the countries to have an international platform to talk about artificial intelligence and solve if there is any problem.
if there is any security issues or any other such issues. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है ना, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट है ना, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे था, तो आप चाहो तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ सकते हो कि about this. Now, one thing which I find very important, although he has not mentioned, he might not have mentioned, is this. ये काफी न्यूज में था, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, which is actually the different countries came together to solve this AI problems, or if there is any privacy issues or any other ethical issues, because AI में ethics का भी issues आता है ना, ethical issues and privacy issues and other issues. उसके लिए actually the nations have come together for global partnership on artificial intelligence. So please tell me which two nations are actually initiated this, although later on other countries also participated. In fact, India is also a member of this. Start किसने किया था global partnership on AI? Yes, Priyanshi, Goel, Hari, you both are right. B is the right answer. Canada and France is the right answer. अगर आप देखोगे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोनाउंस एज जीपे, है ना, एआई ने मैनर दैट रिस्पेक्ट्स, हाँ, ये बात ये करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस तरह यूज किया जाना चाहिए. द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड बी यूज्ड इन सच अ वे दैट इट रिस्पेक्ट्स द ह्यूमन राइट, shared democratic values of its member. Means it should not be misused to violate someone's human right or actually to crush the democracy or something like that. इसलिए this partnership was proposed by Canada and France in 2018 in 44 G7 summit, है ना. उसके बाद later on other countries also participated. आप देखोगे टोटल कितना है, अभी 15 फाउंडिंग मेंबर्स में से अगर आप देखोगे, इन दोनों ने प्रपोज किया था कनाडा और फ्रांस से, बट द फाउंडिंग मेंबर्स आर 15. यस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया भी इसमें, ये ध्यान रखना, ठीक है. फिर जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, यूके, यूएस. बहुत से देखिएगा इसमें चाइना और रशिया नहीं है. दिस यू हैव टू बी केयरफुल. तो ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो यूरोपियन यूनियन भी है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, और प्लस इंडिया भी इसमें, बट प्राइमरली अगर आप देखोगे वेस्टर्न टाइप की कंट्रीज आते हैं, ठीक है. तो चाइना, रशिया इसमें नहीं है ना. और ये सबको तो इनवाइट किया गया था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 15 ही फाउंडिंग मेंबर्स. ओके, सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ब्लू वाला ये इंडिया है, ये यूएस है, हाँ फ्रांस भी, यस यस प्रियांशी गोयल, वेरी गुड. एक्चुअली फ्रांस भी काफी देखो इसमें लोकेशन में ना, जो इनका जीपीआई होता है, पेरिस फ्रांस भी है, मॉन्ट्रियल कनाडा में लोकेशन जो मीटिंग वगैरह होती है. सो इट इज वेरी मच इंटरेस्टेड. इन फैक्ट आई होप यू आर अवेयर दैट पीएम मोदी विल बी गोइंग टू फ्रांस एंड यूएसए, ठीक है, इन फ्यू वीक्स, ठीक है. तो उसमें भी एआई वगैरह से रिलेटेड बात होगी, है ना. सो दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. इसमें और इतना डिटेल नहीं जाना है, जितना है उतना आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ. लेट अस सी फर्दर. हाँ, ये वाली आर्टिकल है जो ग्रोथ ओवर इन्फ्लेशन, यानी ये कह के रहे हैं, हेडलाइन ही कह रही है कि ग्रोथ को प्रेफर किया गया है ओवर इन्फ्लेशन टारगेट और इन्फ्लेशन कंट्रोल. So RBI has decided to go for growth instead of inflation control. यही हेडलाइन है ना. इंटरेस्ट रेट, जो रेपो रेट को घटाया गया है, so by reducing repo rate from 6.5% to, and लिखा ना बेंचमार्क रेपो रेट from 6.5% to 6.25%. ठीक है, अब देखो इसमें है क्या कि कैसे, how it happens. Okay, let me explain. So first of all we have to discuss about demand pull inflation. There are demand pull, cost push inflation, but यहाँ पे आपको demand pull inflation से मैं आपको समझाता हूँ so that you will understand. देखो, these are the two cars. मान लो ये कार, I think the left one is cheaper. I think 4-5 lakhs के राउंड आ जाती होगी. अब तो ये वाले मॉडल नहीं आती, but I'm just giving example. ठीक है, this is an Alto car. The right one is Ertiga, and this would be somewhere around I think 10 to 12 lakhs. ठीक है, मैं आपको बस एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ, just to understand the concept of demand pull inflation. Now, for example, कोई आदमी है, मान लीजिए there's a person, father, mother, C1 and C2 बच्चे, ठीक है, एक फैमिली है. मान लो इसमें फादर मदर मिला करके, जैसे I'm just giving example, they both are earning let's say 60,000 per month, ठीक है, per month. तो एक्चुअली क्या, और इनके पास ये वाली गाड़ी है, तो इससे इनका काम चल जा रहा है, 4 लोग हैं. Now what happens is they both starts a business, मान लो for example father mother मिलके business, या कोई और, they get a better job and now their earning increases from 60,000 to let's say 2 lakh per month. I'm just giving example.
ओके, तब होता क्या है, जब आदमी की सैलरी बढ़ती है तो डिमांड बढ़ता है, ऐसा होता है कि नहीं? द डिमांड इंक्रीजेस। मतलब कि अगर आप किसी आदमी के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा तो वो ज्यादा खरीदेगा, नेचुरल है। So, like for example, if someone is in a student life, he or she buys lesser clothes, but if he or she starts earning money, then उसके पास और कपड़ा आ जाता है, गाड़ी मोटर सब आ जाती है। So होता क्या है कि अगर इसके पास ये गाड़ी, तो अब मान लीजिए घर में मम्मी पापा की अर्निंग बढ़ गई, so the children will start demanding, now we need a big car, ठीक है, तो अब इस कार को बेच करके ये वाली कार ले लिया गया। I'm just explaining it so that you can remember, इसलिए मैंने ये दोनों गाड़ी के फोटो लगाई। क्या बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, लोग 4 ही लोग हैं, 4, हाँ, there are only 4 people in the family, so still I mean small car is enough, but still they buy. Why? Because the money, like it's all about the demand. If you have more money in your hand, there is a chances that you will buy more, ठीक है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का ही मतलब होता है कि अगर जनता के पास, पीपल के पास मनी ज्यादा है, सो दे डिमांड मोर। और किसी चीज की जब डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लेशन आता है, ऐसे नहीं समझते तो ऐसे समझाता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, this is the time, I think somewhere around अप्रैल में, मार्च के लास्ट में, अप्रैल में we had seen lockdown। इससे पहले अगर मैं बोलूं जनवरी 2020 में अगर आप N95 मास्क लेते और इसका प्राइस X रुपीस होता, और लॉकडाउन के जस्ट जब लॉकडाउन चल रहा था, you have bought the same N95 mask and the price is Y, in which is greater, Y is greater than X or X is greater than Y? Please tell me, just think। मैं आपको बता रहा हूं कि डिमांड पर इन्फ्लेशन कैसे वर्क करता है। जब लॉकडाउन हुआ था तो N95 जो मास्क है उसका प्राइस बढ़ा था, ही घटा था? ये कोई भी मास्क जो मिल रहा था या सैनिटाइजर मिल रहा था, द प्राइसेस शूटेड अप। आई होप यू आर अवेयर, है ना? प्राइस बहुत तेजी से बढ़ गया था। क्यों बढ़ा था? व्हाई? बिकॉज ऑफ मोर डिमांड, लोग ज्यादा डिमांड करने लगे थे। यस, वाई इज ग्रेटर देन एक्स। यस, हाँ। तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी चीज लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, किसी भी चीज किसी भी रीजन से, तो इन्फ्लेशन आने का चांस होता है। So when there is more demand, the price of that thing becomes higher because the supply is limited, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर लोगों के पास, पीपल के पास मनी ज्यादा है हाथ में, if they have more money in their hand, they will demand more, and when they will demand more, it will lead to inflation। समझ में आया? आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब यही बात ये रेपो रेट में कहा जा रहा है। अब देखो, अब आप ऐसे सोचो, जस्ट इमेजिन what is repo rate? RBI gives loan to commercial bank, मान लीजिए कोई बैंक है, let's say ICICI बैंक है, I'm just giving example। इसको मान लीजिए लोन दिया, रेपो रेट मान लीजिए पहले 6.5% था, अब इसको घटा दिया तो R-R1 कर देने 6.25%। so what will happen? so RBI will charge lesser interest rate from ICICI बैंक now, या कोई भी कॉमर्शियल बैंक है ना। तो आईसीआईसीआई बैंक या कोई भी कॉमर्शियल बैंक, इसके पास मनी ज्यादा हैंड में आएगा, इट विल हैव मोर मनी, because now when the RBI has reduced the repo rate, the commercial bank or the ICICI bank has to give less money back to the RBI। कम पैसा वापस लौटाना होगा, बिकॉज सूद कम देना होगा ना, तो इनके पास ज्यादा पैसा बचेगा। जब इनके पास ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा लोगों को देंगे लोन। so if the commercial bank has more money, it will extend more loans to the people, आम आदमी को। so it means people will have more money in their hand। Why? Because अगर आईसीआईसीआई बैंक में बहुत ज्यादा पैसा जो, क्या करेंगे? हो सकता है चीपर इंटरेस्ट रेट भी सस्ता कर दे, लो होम लोन ले लो, कार लोन ले लो सस्ता में। यस, दैट इज व्हाट इट सेज, आर्टिकल में लिखा है कि if the ICICI bank will have more money, it will reduce the house interest on house, car, etc। कि मेरे पास ज्यादा पैसा है तो हम कम ही इंटरेस्ट में तो लोन दे देंगे। so it will lead to more people having more money। when people has having more money, it will demand more and it will lead to inflation। is it clear? ये बात समझ में आया कि नहीं? how decline, how reducing repo rate increases inflation in the market, ये समझ में आया? is it clear? because ये पूरा उसी का गेम है, ठीक है। तो अब आरबीआई, इसका मतलब यही बता रहा है, प्रेफरिंग ग्रोथ ओवर इन्फ्लेशन। तो जब आरबीआई ने रेपो रेट रिड्यूस किया, it leads to more money in the hand of people। when there is more money in the hand of people, it will lead to demand pull inflation, ठीक है।
तो बता ये रहे कि आर ग्रोथ ओवर इन्फ्लेशन, यानी आरबीआई ने ग्रोथ को प्रेफर किया है इन्फ्लेशन कंट्रोल के मुकाबले, यानी अभी आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल से ज्यादा ग्रोथ की चिंता है। इट इज मोर कंसर्न अबाउट ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ। वाई? तो ग्रोथ कैसे होगा? तो ग्रोथ कंजम्पशन, आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आई एम श्योर, जीडीपी इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। इसमें सी क्या था? कंजम्पशन। So if there is more consumption, if people start buying more, then it will lead to more GDP increase. Yes. तो एक तो होगा कि डिमांड पर इन्फ्लेशन होगा, लेकिन कंजम्पशन भी तो बढ़ेगा, लोग ज्यादा मकान खरीदेंगे, पीपल विल बाय मोर होम कार्स, car loans, home loans will become cheaper, so people will go and buy more cars, loans, etc., or cars, houses, different products. So when people start buying more, it will push GDP growth. ठीक है? तो यही बता रहे हैं कि जब रेपो रेट घटाया तो ये सोच के घटाया कि they have reduced the repo rate by thinking that we have to prefer currently GDP growth over inflation control. ये समझ में, ये बस हेडलाइन ही मैंने एक्सप्लेन किया, सब कुछ उसी में। ठीक है? I hope it is clear. Growth over inflation means preferring that there should be more consumption demand, more GDP growth, and currently to compromise, even to some extent it is compromising the inflation control. ठीक है? I hope it is clear. और इन्फ्लेशन का टारगेट कितना है आरबीआई का? What is RBI's inflation target? बताइए, प्लीज टेल मी दिस। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बहुत सिंपली, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी सिंपल वे। व्हाट इज आरबीआई's इन्फ्लेशन टारगेट? यस, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, 4 ± 2%, which is actually 2 to 6%, है ना? ठीक है। सो आरबीआई को बस चैलेंज ये होता है कि ग्रोथ भी करना है, at the same time inflation भी कंट्रोल करना, we have to control both the things, है ना? So that is actually a challenge by RBI. ठीक है? Yes, प्रियांशी, पीयूष, you are right, great. इसी को एक्सप्लेन किया हुआ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड ऑल, कि कैसे एंड ऑल कंट्रोल करना है इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स एंड ऑल। नाउ द नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एंड द चैलेंज ऑफ इक्विटेबल एजुकेशन। अच्छा, एक चीज पूछ रहे हैं, अब सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, एक रिपोर्ट आती है, उसको कहते हैं एसर रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट। Which organization releases this report? कोई बता सकता है? और can you please tell me, दूसरा क्वेश्चन है, right to education is a fundamental right under which article? Because the next article talks about education. एक ऐसा रिपोर्ट आती है, एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट, वो कौन रिलीज करते हैं, और राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में? प्रथम एनजीओ, ग्रेट प्रियांशी। पीयूष, आर्टिकल 21 भी ठीक है, बट 21 कैपिटल सेपरेटली बनाया गया है, 21 कैपिटल ए लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। यस प्रियांशी गोयल, राइट। हाँ, आदर्श, हाँ, वेरी गुड। तो एक्चुअली क्या देखो, एनजीओ की प्रथम एनओडी के को फाउंडर ने लिखा है ये आर्टिकल, एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट इज रिलीज्ड। इट टेल्स एक्चुअली बेसिकली कि हाउ इज द एजुकेशन और द स्कूल, हाउ आर द स्टूडेंट्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स परफॉर्मिंग इन इंडिया, है ना? मतलब कि जैसे मान लो क्लास 5 के बच्चे, तो सारे बच्चों को क्लास 5 लेवल की मैथ्स आती है कि नहीं, इंग्लिश आता है कि नहीं, है ना? सो दीस आर द थिंग्स दिस प्रथम एनजीओ कम्स अप विद अ वेरी फेमस सर्वे, एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है? सो उसी के बारे में बता रहे हैं कि वी हैव सीन एक्चुअली कि 1990 से 2000 तक वी हैव सीन अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑल एजुकेशन एक्टिविटीज, है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े-बड़े स्कूल्स बना दिए गए एक्सेट्रा। But he's saying at the same time, indicators show a rush to schools, learning indicators pointed to no change. मतलब क्या है? मतलब ये कि सिर्फ बड़े-बड़े स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बना देने से नहीं होता है ना? That is what he is saying, that if you make a big buildings, fine, it is good. If we have made the everything facilities and all, but indicators have not changed. And education quality improve होने चाहिए. We should ensure that those teachers who are recruited, they are of good quality. They should come on time, they should teach properly, especially focusing on government schools, है ना? कि नहीं, लर्निंग में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, है ना? So that is what he's saying. At the same time, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ये सब आया, स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड-19 इट वाज वेरी मच, है ना? ठीक है? सो 90% रूरल हाउसहोल्ड एट सिंपल मोबाइल फोन 2018 में दिखा रहे हैं कि 90% 2018 में रूरल हाउसहोल्ड, गांव में सिंपल यानी बटन वाला फोन होता था, एंड 36% के पास स्मार्टफोन होता था। इन 2022 the proportion with smartphones has risen to 74%. गांव में भी स्मार्टफोन्स यानी जो टच स्क्रीन वाला फोन है उसके परसेंटेज बढ़ गया, एक्सेट्रा ना। एंड अकॉर्डिंग टू एसे इट हैज ग्रोन फर्दर टू 84% and all. तो ये बता रहे हैं while the percentage of children who have access to smartphone at home is nearing saturation, the proportion
तो वही बता रहे हैं कि इवन जो एजुकेशन स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके भी like percentage of using of smartphones have increased, especially after COVID and all, because now they can get access to education through smartphones and all. ठीक है, तो इसी की बात करें, परसेंटेज नहीं याद रखना, बट जस्ट हैव एन आइडिया. हाँ, तो स्मार्टफोन का मेन यूज होता था पैंडेमिक के दौरान, है ना, पढ़ाई लिखाई, वीडियो एक्सेट्रा, टेक्स्ट बुक एंड ऑल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेशंस एक्सेट्रा आल्सो. जैसे ही पैंडेमिक गया, the digital skill learned during the period sustained, although some of the practice became less important and new excitement of build AI and all. तो जैसे पैंडेमिक गया, now we are having artificial intelligence, है ना. सो इसी की बात करें, इसमें इतना डिटेलिंग जाना, ही टॉकिंग अबाउट दिस बेसिक परसेंटेज एंड ऑल. तो जो मैंने आपको बताया ना, दो तीन चीजें, वो ये कि एनजीओ रिपोर्ट याद रखना है. ये भी मैं देखो बताया था. देखो एक्चुअली हुआ क्या, किसी ने लिखा था राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21, दैट वाज आल्सो करेक्ट. ठीक है, तो ये मैं बताता हूं. बेसिकली आर्टिकल 21 says right to life. Yes. So the Supreme Court had said the Supreme Court has said right to life also means right to education. ठीक है, तो अगर आप 21 भी लिखते हो तो it is not technically wrong. Supreme Court expanded the definition of Article 21 and it said that right to life also means right to education. Then later on, by 86th Constitutional Amendment 2002, the Parliament separately inserted another article, Article 21 capital A. इसमें जो बताया कि right to education is a fundamental right for 6 to 14 years of child for elementary education. जो basic education है वो 21 कैपिटल है, सेपरेट आर्टिकल इंसर्ट करके बताया गया. हालांकि अगर आप 21 ऑप्शन में तो भी मार्क कर सकते हो, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट ये किया था कि राइट टू लाइफ आल्सो मींस राइट टू एजुकेशन. लेकिन इफ द सेपरेट ऑप्शन इज गिवन, गो फॉर 21 कैपिटल ए. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड नो. बाकी इसमें इतना डिटेल नहीं जाना है. और साइड में एक आर्टिकल थी कि द गवर्नमेंट मस्ट एंगेज विद ऑपोजिशन कंस्ट्रक्टिवली एंड ऑल. तो पार्लियामेंट मतलब वही बता रहे हैं कि पार्लियामेंट्री डिबेट्स होता है, तो इट शुड बी हेल्दी डिबेट एंड ऑल. इसमें अब उतना कुछ खास जाना नहीं है, बट जस्ट हैव एन आइडिया that it is focusing on it, that whatever is the issues and all. जैसे अभी यूएस से रिटर्न किए गए इंडियंस को, then महाकुंभ प्रयागराज वाला इशू हुआ, like people died and all, there have been some incidents. तो वो सब जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है या व्हाटएवर इट इज, there should be more constructive debate, है ना. एक इशू होता है more constructive debate on any matter. मतलब कंस्ट्रक्टिव डिबेट कम होता है, आपस में फाइट करने लगते हैं, समटाइम्स इवन स्टार्ट अक्यूजिंग ईच अदर, पर्सनल एक्यूजेशंस एंड आल्सो. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग इट. ठीक है, अब देखो पेज 10 में आर्टिकल थी बजट पर. तो बजट पर वी हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब टू द चैनल, आवर चैनल, गो टू द लाइव सेक्शन. इसमें जाना, नीचे जाते जाना, तो एक इंग्लिश में वी हैव मेड अ वीडियो, कोविन सर हैज टेकन द क्लास, और ये वाला मैंने इंग्लिश में लिया है. इंग्लिश मींस द टेक्स्ट इज इन इंग्लिश एंड आई हैव स्पोकन इन हिंदी. ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी एक वीडियो यू कैन वॉच. एंड दूसरा, प्राइवेट बिल सीक्स टू सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर 100 days a year. ये आपको समझना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. तो एक तरह का, दो तरह का बिल होता है, एक प्राइवेट मेंबर बिल, एक पब्लिक मेंबर. तो प्राइवेट बिल क्या होता है? एक पब्लिक मेंबर बिल, एक प्राइवेट मेंबर. तो पब्लिक मेंबर बिल मतलब जो मिनिस्टर्स वगैरह इशू करते हैं, बिल इनिशिएट करते हैं. प्राइवेट मेंबर यानी कोई भी एमपी, एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट, and if he or she initiates the bill, that's called as private member bill. ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये डेरेक ओबराय साहब हैं, आई थिंक सीनियर पोजीशन मेंबर इन राज्यसभा, डेरेक ओबराय एंड मनोज कुमार झा मूव्ड अ सेपरेट बिल. दोनों ने बिल इशू मूव किया, मतलब इनिशिएट किया कि प्राइवेट की 100 days सिटिंग होना चाहिए. एक्चुअली क्या है कि मतलब देयर आर 365 days, so at least the parliamentarians should come and sit for 100 days in parliament. कम से कम ये मिनिमम टारगेट होना चाहिए. Because we have seen a lot of incidents where actually 100 days bhi nahi ho pata hai, there are less debates and all. So these two members of parliament, they have initiated a bill. So let us see whether the bill will be passed or not, but they have initiated a bill that कि कम से कम 365 दिन में 100 दिन जो लोग आए पार्लियामेंट में बैठे at least. That is what they have, this was in the news. Okay, now अब हाँ, हम लोग बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट टू फ्रांस, एंड यू कैन सी इट हियर. सो ही विल बी गोइंग टू फ्रांस वेरी सून, विल मीट इमैनुअल मैक्रोन. तो इसमें क्या पहला है, डिफेंस रिलेटेड, अ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर. हाँ, इट्स अ वेरी गुड, आई थिंक, आई होप यू अंडरस्टैंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर. ये समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल के लिए. देखो अब मैं आपको बताता हूँ. देखो
एक चीज होती है न्यूक्लियर एनर्जी। देखो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड एज डुअल यूज टेक्नोलॉजी। आपने ये टर्म सुना होगा। डुअल यूज मींस इट कैन बी यूज फॉर डुअल, इट कैन बी यूज फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। अगर इसको लेस एनरिचमेंट हो 2-3-4% का अगर यूरेनियम एनरिचमेंट हो, इफ देयर इज मोर देन 90% यूरेनियम एनरिचमेंट देन दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर बॉम्ब। ना तो ये तो नहीं करना है, ये करना है, मतलब एनर्जी जनरेट करना है फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल। इसके लिए रिएक्टर्स बनाए जाते हैं ना। सो जो जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स वही है, बिकॉज जनरली न्यूक्लियर एनर्जी इज कंसिडर्ड एज रिन्यूएबल, बिकॉज बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ uranium can create a lot if it is if through the modular reactor or through the nuclear reactor it can create huge amount of energy। इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी के लिए एफर्ट लगाती गवर्नमेंट। आई होप यू आर अवेयर वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, आपने नाम सुना होगा, दैट इज व्हाट यू शुड नो। एक अग्रीमेंट इससे रिलेटेड बात हो रही है, फिर दूसरा एयरक्राफ्ट एमआरओ मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल से रिलेटेड। एक जो इंपॉर्टेंट है 26 राफेल एम फाइटर जेट से रिलेटेड। ये पहचानते हो व्हाट इज दिस? इसका नाम कोई बता सकता है? एनीवन? एक ही तो अभी फिलहाल है इंडिया के पास, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। सो देयर आर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, वन इज इंडिजिनस मतलब मेड इन इंडिया। उसका नाम बताइए। ये एक शिप है, दिस इज अ शिप, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, व्हिच कैरीज एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट कैरियर इसको कहते हैं ना। आईएनएस विक्रांत नाम सुना होगा, मेड बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। यस नमो, वेरी गुड ना, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, ठीक है। तो इसमें से जो है ना फाइटर जेट्स वगैरह जाती है, तो इस पर राफेल जेट्स लगने के लिए सो द गवर्नमेंट हैज will be doing a deal, almost it is done। 26 राफेल जेट्स इट विल बाइंग फ्रॉम फ्रांस। जो अर्लियर आया था वो एयरफोर्स के लिए था, जो पहले वी हैड बॉट राफेल जेट्स दैट वाज फॉर एयरफोर्स, बट दिस इज फॉर नेवी, ठीक है, फॉर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। इसके लिए डील होने जा रहा है। अच्छा बताइए, तो राफेल जेट्स हैव बीन मेड बाय व्हिच कंपनी ऑफ फ्रांस? फ्रांस की कौन सी कंपनी है? नहीं, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर दो है, एक विक्रमादित्य है और एक विक्रांत है। विक्रमादित्य भी हम बॉट फ्रॉम रशिया, ठीक है। मतलब there are 2 aircraft carrier, one is INS Vikrant which is indigenous aircraft मतलब made in India, there is another one INS Vikramaditya which we have bought from Russia, so that is not indigenous technically, ठीक है। सिर्फ एक ही अभी है इंडिया के पास करंटली। हाँ, राफेल इज Dassault Aviation is actually the company from France that has made this, ठीक है। तो एक डील ये हो गया। फिर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे। सो जैसे एक बात होता है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, so initiative of France and Canada where India is also a part of it, इसकी बात हो रही है। सो मोस्ट लाइकली देयर विल बी डिस्कशन ऑन दैट। फॉरेन सेक्रेटरी इज मिस्टर विक्रम मिस्री, ठीक है। सो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर एक और एक्सरसाइज है, ट्रोपेक्स एक्सरसाइज वुड बी डन बाय इंडियन नेवी, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िएगा, where 65 ships will be participating, so please read about that। फिर एक ये मामला है, एक्चुअली क्या है, I hope you are aware when a state legislative assembly passes a bill it goes to the governor and governor के पास 3-4 ऑप्शन होता है, either reject और send back और keep it मतलब pocket veto, do nothing मतलब जिसको कहते हैं, ना ही साइन करो ना ही रिजेक्ट करो। और एक और होता है सेंड टू प्रेसिडेंशियल एसेंट, प्रेसिडेंट को भेज देना, ठीक है। तो ये सब चीज पता होना चाहिए बिकॉज देयर हैव बीन सम फ्रिक्शंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नर इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सो यही बता रहे हैं। तो ये है आर्टिकल 200, है ना, इसके बारे में पढ़ना, जो पावर्स ऑफ द गवर्नर टू गिव एसेंट टू द बिल्स एंड ऑल, ठीक है। फिर उसमें आता है 201 टॉक्स अबाउट बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन, अगर गवर्नर चाहे तो खुद नहीं साइन करे, प्रेसिडेंट को भेज दे, ठीक है। कुछ कुछ केस में कंपलसरी होता है कि प्रेसिडेंट को भेजना। For example, if the power of a high court is being altered, in that case, it is compulsory that the governor should send it to the president rather than signing it, ठीक है। तो बाकी सब चीजें आपको पता होना चाहिए कि दिस इज एक्चुअली द एसेंट, कौन कौन से केस में क्या क्या पावर होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता भी दिया, है ना। विथ होल्ड द एसेंट मतलब होता है रिजेक्ट करना, है ना। एक होता है अप्रूव कर देना, साइन कर देना, एक रिजेक्ट कर देना, सेंड बैक कर देना,
ठीक है, ये तीनों एक में कुछ नहीं करना, ऑल्दो इट इज नॉट मेंशन्ड हियर, बट द प्रॉब्लम इज इसमें टाइमलाइन नहीं मेंशन होता है, इतना देर के अंदर यू हैव टू साइन दिस. So there is one more power which is not mentioned in this article, and that is you can do nothing. ठीक है, एक और इसको हम लोग कहते हैं पॉकेट वीटो. मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों केस में होता है कि अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट चाहे तो कोई बिल साइन नहीं करे, मतलब नहीं साइन करे, नहीं रिजेक्ट करे, नहीं वापस भेजे, नहीं प्रेसिडेंट को भेजे. सो he'll do nothing. That's called as pocket veto. Although it is nowhere mentioned, but ये आता इस बात से, it is derived from the fact that there is no timeline mentioned. कि a governor is supposed to sign within 2 weeks or 3 weeks or 6 months. तो क्योंकि कोई टाइम पीरियड नहीं मेंशन है, तो एक और पावर होता है, उसको पॉकेट वीटो कहते हैं, कि डूइंग नथिंग. सो इसमें भी कई बार इश्यूज होते हैं कि गवर्नर इज नॉट साइनिंग द बिल और डूइंग नथिंग और समथिंग लाइक दैट. एक चीज बस पता होना चाहिए कि मनी बिल को वापस नहीं भेज सकते. मनी बिल कैन नॉट बी सेंट बैक, ये आपको पता होना चाहिए. यू रिजेक्ट और एक्सेप्ट और सेंड इट टू द प्रेसिडेंट, बट वापस नहीं भेज सकते. ठीक है ना? सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. Okay, now let's talk about Trump sanction ICC for illegitimate probes and all. ICC is International Criminal Court, and I hope you are aware. International Criminal Court headquartered in The Hague. Here is India. This is Netherlands. यहाँ एक जगह The Hague. Here you will find International Criminal Court. ये different. It is different from ICJ. हाँ, absolute मतलब डायरेक्ट रिजेक्ट कर देना. Yes, Namo, you're right. हाँ, राजेंद्र प्रसाद के जमाने में एक दो जगह हुआ था इस तरह का इशू. यस, यू आर राइट. हाँ, सो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है. तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किया ये था, इट हैड इशूड अरेस्ट वारंट अगेंस्ट नेतन्याहू at that time. Even in the past it had issued arrest warrant against Vladimir Putin also. ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए. तो इसीलिए the America was not happy and it has issued a lot of actions against ICC, International Criminal Court officials. कर मतलब है कि एसेट फ्रीज, यानी अगर कोई आईसीसी के ऑफिशियल्स, उनका अमेरिका में कोई बैंक अकाउंट है तो उनको फ्रीज कर दिया गया, और एंड देयर फैमिली मेंबर्स, एम्प्लॉइज एक्सेट्रा का. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. ओके, इसमें मेंबर्स हैं, आप देख सकते हो. स्टेट पार्टी ग्रीन वाले जो उसके मेंबर्स हैं. ठीक है, ऑरेंज वाले विड्रॉ कर लिए, जैसे यूएस है, ये पहले मेंबर था आईसीसी का, विड्रॉ कर लिया. रेड नॉट अ स्टेट पार्टी, देखो इंडिया इज नॉट अ पार्टी. बाकी जो ग्रीन वंस है, दे आर मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स. ठीक है. Okay, so this is all about today's class. Tomorrow at 3 p.m. Sunday को 3 p.m. में I'll be doing a session. I'll conduct a quiz on current affairs of January first week. ठीक है, so do join me there. उसमें आपको एक revision हो जाएगा. That would be very very beneficial. Tomorrow 3 p.m. I'll be meeting. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.